Krishna, Krishna Krishna, Hare Haribol, can you please bring my mic closer, Prabhu? We can't hear you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Is it audible, Prabhu? Yeah, now it's better. A little more will be better. Little more will be better. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Happy Dasara. It's okay now, bro? Yeah, it's better. Now it's okay, Prabhu. Better. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Krishna Krishna
Krishna
Thank you very much, Srinivas Prabhu, Radhanswa Prabhu, Dharani Mata, and young Siddharth. Very nice to hear you. Good Kirtan. And where is Moksha? She also best wishes to her. I hope I not missed out anybody. Srinivas, I hope the devotees are there, or anybody more is there in the background. I didn't see them. So thank you all. And Pushpita Mataji. Srinivas is there. Okay. My who else is there? Vedika, her daughter. Okay. Hare Krishna. Okay. Wishing all of you all the very best from Samdesh and a big Hare Krishna mantra for your well-being. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you all. Very good. Has Prabhu joined? No, Prabhu, I don't see him. He's not coming, right? Yet. Okay. We'll just wait for a second, then I'll give him a call. Yes. Yamaga Prabhuji is there, right? Translate. Yes. Hare Bol. Hare Krishna. Danda Pram. आपको भी विजयदशमी की सबकी शुभकामनाएं हो और पूरे परिवार को हरे कृष्णा। हरे हरे। सब श्याम देश भक्तवृंद को विजयदशमी की शुभकामनाएं। हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको भी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Still not joined. टाइमिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है उनको, टाइमिंग का जरा देखो। He knows the timing. He's in Europe. Sorry. हाँ, आ गया। Is there? Is he joined, Praja Krishna Prabhu? No, I don't see him yet. Okay. Hare Krishna. Continue Kirtan or? We can sing Narasimha prayer. Go on. What Ram Bhajan, on being Vijayadashami, Siddharth Prabhu is ready to sing that Ramachandra doing 2 lines. How long is it going to be? Because if Prabhu joins, I want to discuss it. Maybe 2-3 minutes. How many? 2-3 minutes. Yeah, that's fine. Good. Okay. Srinivas Prabhu, can you unmute?
ഹരി ഞാനോ എന്ത് പറ്റി വന്നോ നേരത്തെ ഞാൻ नरसिम्हा जी भी कर सकते हैं, नरसिम्हा जी। अरे वो
विजयादशमी की दशहरा की शुभकामनाएं हो और सब लोगों को चाहेंगे कि ये जो हमारे जितने भी जो अनर्थ हैं वो हम प्रार्थना करना चाहिए भगवान राम से कि वे सब उनका नाश करिए और हमें अच्छा भक्त बनाएंगे। हरि बोल, हरे कृष्णा। Prabhuji had sent a message that he may be 10 minutes late. I'll just check whether it's now they're ready. Krishna Prabhu, has he joined? Just let me check. Not yet, Prabhu. Right. Okay.
Maybe I can connect through Mayapur TV in the meantime, Prabhuji. Yeah, he's joining in 2 minutes, he said. He got stuck somewhere. Okay, anyway, just do a little kirtan, it'll be better. Okay. Srinivas Prabhuji. I think he's wound up. Yes, Prabhuji. Srinivas, you have not been doing kitchen for a long time. So this is like, you have been forced. Srinivas. He's telling you. Hare Krishna, Prabhuji. Yeah, you have been avoiding kirtan program in the morning with me. So now you see you have got struck today. Please continue. Jai Ram, Jai Ram, Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Shri Ram, Jai Ram.
can stop now. Hare Krishna. Thank you. Thank you. Thank you for the nice kirtans. Thank you so much. Hare Krishna. Vraja Krishna Prabhuji has joined now, so you can spotlight him. Let me just introduce His Grace. Vraja Krishna Prabhuji, welcome. You are muted actually. Yeah, you have to unmute yourself. Vraja Krishna Prabhuji. Yeah. Okay. So we have been anxiously waiting for you. Welcome on Dasara Day. And thank you, Prabhuji. I presume you're in Bulgaria, right? Yes. Okay, Jai. Okay, let me introduce Your Grace. Prabhuji, as you speak a little bit, then Hemanga Prabhuji will be translating in Hindi and then again back to you in English. Okay. So that's how we do it. So we are very fortunate to have His Grace Vraja Krishna Prabhuji with us today, all the way from Bulgaria. Prabhuji is senior disciple of His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj. Hemanga Prabhuji. हाँ, तो ये है ना, हम बहुत ही हमारा सब बड़ा सौभाग्य आज की हमारे बीच हिज ग्रेस ब्रज कृष्ण प्रभु पधारे हैं और ये है ना वरिष्ठ भक्त जो शिष्य हैं जो उनके भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज उनमें से एक हैं और ये अभी बल्गारिया में है अभी ये. Prabhuji has been nearly 30 years plus in the ISKCON movement and he is specialized in music also, as we know. He's been an excellent preacher going to various parts of the world like European countries like Greece, Turkey, and many of the European countries, of course, and Africa. He has also been in South Africa for a very long time, serving there in most of the temples, senior posts. प्रभु जी बहुत अच्छा कीर्तन भी करते हैं और बहुत अच्छा प्रवचन भी करते हैं और बहुत अच्छा प्रशिक्षण भी देते हैं भक्ति के बारे में. तो इसलिए कई यूरोप के कई देशों में, तुर्की में और ग्रीस में वहाँ पे जाते हैं और जो दक्षिण अफ्रीका में भी काफी समय रहे वहाँ पे और काफी उनकी सेवा है वहाँ पे भी. अफ्रीका में भी काफी समय उन्होंने अच्छे बड़े उस पर पदवी पे रह के उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की है. He has motivated a lot of youth and recently during the COVID times itself, he has started a new center in Bulgaria, which is flourishing. I can see a lot of photos and posts. So we wish Prabhuji with the very best from all of us in Shamdesh. तो अभी जैसे देखा जितने भी जो युवक हैं युवकों को उन्होंने काफी अच्छा प्रशिक्षण दिया है. इसके साथ साथ अभी जो कोविड के समय में उन्होंने बहुत सारा जो एक बहुत अच्छा एक प्रचार केंद्र जो बल्गारिया में उन्होंने खोला है और उनके जो फोटो हैं जो नेट पे आते हैं वो सब देख के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत अच्छा वो प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छी सफलता मिली है उसको प्रचार कार्य में बल्गारिया में भी. Thank you so much. Vraja Krishna Prabhuji, over to you. Okay, 1 second. Hare Krishna, dear devotees. Can you hear me well? Yes. Okay. I'm very happy to be with the Untitled Chapter this morning. So today is the Shera also, and it's a very auspicious day. I prepared to sing you one of my favorite kirtans also with the guitar. तो आज मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैं आज आप शामदेश भक्त के विंद के बीच में अवसर मुझे मिला है आपका संग करने का और आज सबको जो दशहरा है बहुत शुभ दिन है और इसकी जो आपको सबको शुभकामनाएं और मेरा जो बहुत ही जो प्रिय जो गीत है मैं गाना चाहता हूँ गिटार के साथ में. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Hari Haraye Namaha Hari Haraye Namaha Hare Haraye Namaha Hare Haraye Namaha
Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Hare Haraye Namaha. Hare Haraye Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Giridhari Gopinatha Madana Mohan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Haraye Namaha, Hare Haraye Namaha, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha, Gopala Govinda Ram, Shri Madhusudan, Gopala Govinda Ram, Shri Madhusudan, Giridhari Gopinata, Madana Mohan, Giridhari Gopinata, Madana Mohan, Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Hare Krishna. Hare Hare. Now we continue with Srimad Bhagavatam, second canto, 5th chapter, text 25.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasmadapi. Sorry. Tamasat api bhutader. Vikur Vanatabu Namaha. Tasyamatra Guna Shabdo. Yamatra Guno Shabdo. Shayo. Tasmat Tamasatapi Bhutader. Tasmad api bhutade. Tamasatapi Bhutader. Tasmad api bhutade. Tamasat api Bhutader. Okay. Tamasad. Yes, tamasad api bhutade. Yes, correct. Tamasat api Bhutader. Tamasad api bhutade. Vikurvanat Abhu Navaha. Vikunad abhun nabha. Tasyamatra Gunan Shabdo. Tasya matra gunha shabdo. Lingam Yat Drashtra Drashayo. Lingam yadda drashta dashayayo. Tamasat api Bhutader. Tamasad api bhutade. Vikurvanat Abhu Navaha. Vikunad abhun nabha. Tasyamatra Guna Shabdo. Tasya matra guna shabdo. Lingam Yat Drashtri Drashyo. Lingam yadda drashta dashayayo. Lingam Yat Drashtri Drishayo. Lingam yadrashta dashayayo. Word by word translation. Tamasat, Tamasat. from the darkness of false ego. From the darkness of false ego. Api, Api. certainly. Certainly. Bhutade, Bhutade. of the material elements. Of the material elements. Vikurvanat, Vikurvanat. because of transformation. Because of transformation. Abhut, Abhut, adbhut, generated. generated. Nabaha, Nabaha, the sky. sky. Tasya, Tasya, its. its. Matra, Matra, subtle form. subtle form. Gunaha, Gunaha, quality. quality. Shabdaha, Shabdaha, sound. sound. Lingam, Lingam, characteristics. characteristics. Yat, Yat, as its. as its. Drashtri, Drashtar, the seer. the seer. Dishayo, Shayayo, of what is seen. of what is seen. Translation and purport by Srila Prabhupada. The Prabhupada ki jai. Right. From the darkness of false ego, the first of the 5 elements, namely the sky, is generated. Its subtle form is the quality of sound, exactly as the seer is in relationship with the seen.
Continue, Prabhu, continue. Later on Hindi, I will read. Okay. You continue. Okay. Purport by Srila Prabhupada. The 5 elements, namely sky, air, fire, water, and earth, are all but different qualities of the darkness of false ego. This means that the false ego, in the sum total form of Mahat Tattva, is generated from the marginal potency of the Lord. And due to this false ego of lording it over the material creation, ingredients are generated for the false enjoyment of the living being. The living being is practically the dominating factor over the material elements as the enjoyer, though the background is the Supreme Lord. Factually, save and except the Lord, no one can be called the enjoyer. But the living entity falsely desires to become the enjoyer. This is the origin of false ego. When the bewildered living being desires this, the shadow elements are generated by the will of the Lord. And the living entities are allowed to run after them as after a phantasmagoria. It is said that first the Tanmatra sound is created, and then the sky, and in this verse it is confirmed that actually it is so, but sound is the subtle form of the sky, and the distinction is like that between the seer and the seen. The sound is representation of actual object, as the sound produced speaking of the object gives an idea of the description of the object. Therefore, sound is the subtle characteristic of the object. Similarly, sound representation of the Lord in terms of his characteristics is the complete form of the Lord, as was seen by Vasudev and Maharaj Dasharat, the fathers of Lord Krishna. And Lord Rama. The sound and representation of the Lord is non-different from the Lord himself, because the Lord and his representation in sound are absolute knowledge. Lord Chaitanya has instructed us that in the holy name of the Lord, as sound representation of the Lord, all potencies of the Lord are invested. Thus, one can immediately enjoy the association of the Lord by the pure vibration of the sound representation of his holy name. And the concept of the Lord is immediately manifested before the pure devotee. A pure devotee, therefore, is not aloof from the Lord even for a moment. The holy name of the Lord, as recommended in the Shastras, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, may therefore be constantly chanted by the devotee aspiring to be constantly in touch with the Supreme Lord. One who is thus able to associate with the Lord is sure to be delivered from the darkness of the created world, which is a product of false ego. Tamasi ma jyotir kama. Hare Krishna. हरे कृष्णा। हिंदी में हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का। जय श्रील प्रभुपाद की। जो स्कंद 2 है, अध्याय 5 है और श्लोक नंबर 25 है। मिथ्या अहंकार के अंधकार से 5 तत्वों में से पहला तत्व आकाश उत्पन्न होता है। इसका सूक्ष्म रूप शब्द का गुण है। ठीक उसी प्रकार जिस दृष्टा का दृश्य से संबंध होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का। जय श्रील प्रभुपाद की जय। 5 तत्व जिनके नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी है, मिथ्या अहंकार के अंधकार के ही विभिन्न गुण हैं। इसका अर्थ हुआ कि
महत तत्व के रूप में मिथ्या अहंकार भगवान की तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है और भौतिक सृष्टि पर प्रभुत्व जताने के इस मिथ्या अहंकार के कारण ही जीव के मिथ्या भोग के लिए सारे अवयव उत्पन्न होते हैं। जीव भोक्ता के रूप में भौतिक तत्वों के ऊपर प्रधान कारक बना रहता है। यद्यपि पृष्ठभूमि में परमेश्वर रहता है, वास्तव में भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई भोक्ता नहीं कहा जा सकता, लेकिन जीव झूठे ही भोक्ता बनना चाहता है। मिथ्या अहंकार का यही मूल है। जीव जब मोहग्रस्त जीव इसकी इच्छा करता है तो भगवान की इच्छा से शायद तत्व उत्पन्न होता है और जीवों को उनके पीछे उसी तरह दौड़ने दिया जाता है जिस तरह मृग मरीचिका के पीछे मृग। कहा गया है कि पहले ध्वनि तन मात्र उत्पन्न होती है, उसके बाद आकाश तत्व निर्माण होता है और इस श्लोक में पुष्टि की गई है कि वास्तव में ऐसा ही होता है, लेकिन ध्वनि आकाश का सूक्ष्म रूप है और इनमें जो अंतर है वह दृष्टा तथा दृश्य के अंतर जैसा है। ध्वनि वास्तविक वस्तु का प्रतिरूप है। जिस वस्तु के बारे में बोला हुआ शब्द या ध्वनि उस वस्तु के वर्णन का बोध कराता है, अतः ध्वनि वस्तु का सूक्ष्म गुण है। इसी प्रकार भगवान का ध्वनि रूप उनके लक्षणों के संबंध में भगवान का पूर्ण रूप है। जैसे कि भगवान कृष्ण भगवान राम के पिता वासुदेव महाराज दशरथ ने देखा था। भगवान का ध्वनि रूप साक्षात भगवान से अभिन्न है, क्योंकि भगवान तथा उनका ध्वनि रूप परम ज्ञान है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें उपदेश दिया है कि भगवान के पवित्र नाम में जो भगवान का ध्वनि रूप है, भगवान की सारी शक्तियां निहित है। अतः भगवान के पवित्र नाम के ध्वनि रूप के उच्चारण से मनुष्य तुरंत भगवान के सानिध्य का आनंद उठा सकता है और शुद्ध भक्त को तुरंत ही भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाता है। अतः शुद्ध भक्त भगवान के से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं होता। अतः जो भक्त निरंतर भगवान के संपर्क में रहने की कामना करता है, उसे शास्त्रों द्वारा अनुमोदित भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। जो इस प्रकार भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, वह निश्चित रूप से मिथ्या अहंकार से उत्पन्न जगत के अंधकार से उभर आता है। तमसो माम ज्योतिर्गमय। हरे कृष्ण। Hare Krishna. Om Agnati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuranmilita Mena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swaka Padantikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Upesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Taruvescha Kripa Sindhu Vevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, dear devotees, here in this chapter we are hearing from Shukadev Goswami, who is actually teaching Parikshit Maharaj about the creation of the material universe.
तो यहाँ पे जो हरे कृष्ण सब भक्तों को, तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि कैसे जो सृष्टि का रचना कैसे हुई, उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया जा रहा है. And he is introducing, Shukadeva Goswami is introducing a conversation between Lord Brahma and his disciple Narada Muni. तो यहाँ पे जो है ना एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी उस चीज का वर्णन कर रहे हैं, जो ये कौन सा है जो वर्णन है जिसमें कि जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ है, वही वार्तालाप का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी. So these were the words actually of Lord Brahma teaching his disciple Narada Muni about. तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी नारद मुनि को सृष्टि के बारे में जो कुछ भी उसको शिक्षा दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, वही चीज यहाँ पे उसका ही चीज का वर्णन किया जा रहा है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा. Srimad Bhagavatam is a scripture that is meant to illuminate the entire universe. तो श्रीमद् भागवतम जो है एक्चुअली ये जो साहित्य है वो पूरे जो जगत का, पूरे विश्व को है ना, उसको प्रकाश, उनके अंधकार को उनके प्रकाश में लाने के लिए बनाया गया है, ये लिखा गया है. In this universe we are faced with the factor of darkness. तो हम जो इस जो देखा जाए तो इस जगत में है, इस विश्व में हम लोग है ना पूरा अंधकार में एक्चुअली देखा जाए तो सब लोग अंधकार में है. So the word tamasa, it means darkness. तो जो तामस शब्द का मतलब ही होता है अज्ञान. And it's interesting that in my language it means the same thing. तो एक्चुअली देखा जाए तो मेरी भाषा में भी यही सेम चीज इसको बोला जाता है, यही इसका अर्थ है, यही बोला जाता है. Yeah. So this is the world of darkness. तो ये जो जगत है ये पूरा अज्ञान का अंधकार में है. It is darkness because sometimes there is the absence of the sun, and also it is a darkness because there is absence of spiritual knowledge. देखा जाए तो जो अंधकार होता है तो दो चीज से होता है. तो एक तो जैसे अगर सूर्य नहीं है अगर आकाश में तो भी अंधकार छा जाता है, और दूसरा ये कि अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो भी हमारे हृदय में अंधकार छा जाता है. So the Bhagavatam begins by the forest of Naimisharanya, where great sages are posing questions to Sutta Goswami, Roma Harshan Sutta. तो जो देखा जाए तो यहाँ पे जो श्रीमद् भागवतम का कैसे आरंभ हुआ कि जहाँ पे ये जो नैमिषारण्य में है, जितने भी नैमिषारण्य के ऋषि हैं वो जो सुत जो गोस्वामी जो रोम हर्षण उनसे के सामने प्रश्न प्रस्तुत किए जा रहे हैं. Roma Harshana Sutta, he is the son of Roma Harshan. तो ये जो रोम हर्षण के सुत मत है, जो सुत गोस्वामी ये रोम हर्षण के पुत्र हैं. So the sages knew that we are now in the material world and it's the world of darkness, but they also knew that Kali Yuga is coming, so it's even more dark. तो क्योंकि ऋषियों को मालूम था कि हम जो ये जगत में पूरा अंधकार ही है, पूरा ये जो अभी जो कलयुग आ रहा है एकदम समीप आ गया है कलयुग, ये भी पूरा अंधकार में ही है, रहेंगे ज्यादातर लोग. Therefore they approached Sutta Goswami. They chose Sutta Goswami, who was the most senior amongst all of them, to speak the Bhagavatam. इसलिए उन्होंने है ना चुनाव किया जो सबसे वरिष्ठ थे उनके, उन सभी लोगों में जो वरिष्ठ थे उनमें है ना जो सुत गोस्वामी, उनका चुनाव किया, उनसे उनके जो मुख कमलों से भागवतम श्रवण करने के लिए. And they believed that hearing the Bhagavatam will illuminate their hearts. और जो उनको पूरा विश्वास था कि जो है ना भागवतम है वो उनके हृदय में को है ना पूरा प्रकाशमय बना देगा. So the Bhagavatam begins with that
particular story with Sutta Goswami in Naimisharanya. श्रीमद् भागवतम का जो है ना सुत गोस्वामी जो नैमिषारण्य में है, वहां से एक्चुअली जो कथा का आरंभ होता है. And gradually, Srimad Bhagavatam unfolds. It goes through Sutta Goswami teaching them first and foremost about the absolute truth, Lord Krishna. जो यहाँ पे जो सुत गोस्वामी उनको बता रहे हैं कि जो परम सत्य है वो भगवान कृष्ण है, उनके बारे में उनको ज्ञान दे रहे हैं सर्वप्रथम. And then he was teaching them about devotional service. उसके बाद उनको भक्ति के बारे में वो शिक्षा दे रहे थे. Then he was teaching the great sages. He was teaching them about all the incarnations of the Lord, the avatars. इसके बाद जितने भी ऋषि मुनि उनको जो है ना जो जितने भी भगवान के अवतार हैं उनके बारे में शिक्षा दे रहे थे. And then gradually he was explaining to them how Bhagavatam was written, how Vyasadeva met Narada Muni. और ये फिर उनको बताया कि कैसे भागवतम लिखा गया है और कैसे व्यासदेव और नारद मुनि का आपस में मुलाकात हुई. And how Narada Muni instructed Vyasadeva to write Srimad Bhagavatam. और कैसे नारद मुनि ने फिर व्यासदेव जी को जो बताया कि उनको भागवतम लिखना चाहिए. We also hear the story of Narada Muni, which is a great story of how he was the son of maidservant and he became a great devotee just by serving the devotees. वैसे हम नारद मुनि का भी हम जो कथा पढ़ते हैं भागवतम में कि कैसे वो है ना बहुत सारे जो महान भक्त हैं उनकी सेवा करते जब वो छोटे थे और उनकी सेवा करने के उनके आशीर्वाद से वो भी एक उच्च कोटि के भक्त बन गए. And after that, he continues directly with the subject of Mahabharata. इसके बाद फिर वो है ना जो महाभारत का जो विषय है उनके बारे में चर्चा करना आरंभ किया उन्होंने. And gradually he brings all the Bhagavatam to the point of the birth of King Parikshit. तो इसके लिए इसके बाद जो भागवतम को धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ाते गए. उसके बाद जो महाराज परीक्षित है उनके साथ जो घटना हुई वहां तक लेके आ गए वो. And how Maharaj Parikshit was he curbed the entrance of the age of Kali. और कैसे उन्होंने जो महाराज परीक्षित ने जो है वो जो कली का जो प्रवेश है उसको कैसे उन्होंने उसका स्वागत किया उन्होंने. And then how he was cursed, Maharaj Parikshit. और फिर कैसे इसके कारण जो जब कली का उन्होंने स्वागत करने के बाद वो कैसे उनको श्राप मिला उसके बारे में वर्णन किया गया है. And how he, in desperation, he went to the Ganges river, and he got the mercy of Shukadeva Goswami actually. तो इस तरह से जब वो गंगा नदी की तरफ गए और वहां पे कैसे फिर सुखदेव गोस्वामी से मुलाकात हो गया, उनसे कैसे उनको कृपा मिलती है सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित को. And from that point onwards, we hear the direct conversation where the second canto begins. We hear the direct conversation between Shukadeva Goswami and Maharaj Parikshit. तो इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सीधा सीधा जो प्रत्यक्ष जो वार्तालाप हुआ है वो जो दूसरे स्कंद से आरंभ होता है, जो कि श्रील सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में जो प्रत्यक्ष जो चर्चा है वार्तालाप होता है उसके बारे में वर्णन किया गया है. So Srimad Bhagavatam is studied in different stages. तो इसलिए जो है ना श्रीमद् भागवतम अलग अलग उसके जो अवस्था में उसको बताया गया है, श्रीमद् भागवतम का वर्णन किया गया है. And these stages represent different parts of the body of Lord Krishna. और ये जो अलग अलग जो स्तर पे जो भागवतम दिया गया है वो अलग अलग जो भगवान कृष्ण के शरीर के अंग है उसको उन्होंने दर्शाता है, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं वो. Yeah, so the first canto is Krishna's lotus feet.
तो पहला स्कंद है कृष्ण के जो चरण कमल है, And by studying first canto, we take darshan of the Lord's lotus feet. और हम जब पहला स्कंद का जब हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब हम भगवान कृष्ण के जो चरणों कमलों का हम दर्शन करते हैं। And by studying the second canto, we actually observe the Lord's ankles. और जब हम अगर दूसरे अगर हम जब जो स्कंद को जब पढ़ते हैं तो भगवान के जो ये जो टांगे हैं वो हमें दिखती है, And hopefully we will hear his ankle bells. और इसके बाद हम उनके जो एड़ियां हैं उसमें जो जो घुंघरू हैं, घुंघरू की आवाज को हमें सुनाई देती है। So we are taking shelter of Krishna at the first canto, and the second we increase our attraction towards him. इसलिए जो हम श्रीमद् भागवतम क्रमशः कैसे आगे बढ़ते हैं कि कैसे हम उनको पहले चरणों को तरफ पढ़ते हैं, पहले उनका ज्ञान अर्जित कर धीरे धीरे करके हम ऊपर की तरफ कृष्ण की तरफ हम जाते हैं। फिर And gradually we reach the lotus face of the Lord, which is the 10th canto. धीरे धीरे करके जब ऊपर आते आते फिर जब हम है ना भगवान कृष्ण का जो जो चेहरा है, उनका जो मुख है, मुख का हम दर्शन करते हैं, जो कि 10वां स्कंद है भागवतम का। So by reaching the 10th canto, one already has to be sufficiently purified from the darkness of this world. तो इसलिए हम 10वें स्कंद पे पहुंचने के पहले हमें है ना जब पर्याप्त रूप से जब हम शुद्धिकरण हो जाएगा तब हमें फिर 10वां स्कंद में पहुंचने के बाद हम उसको समझ पाएंगे। And here we are in the second canto, 5th chapter, text 25, and we are learning about the creation of this material world. इसलिए जो आज के हम जो दूसरा जो स्कंद के जो 5वां अध्याय के 25वां श्लोक में है ना जो ये जो सृष्टि का जो वर्णन है, सृष्टि की रचना का वर्णन, उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। Gradually Shukadev Goswami will bring us from the very basic knowledge to a very complex knowledge of bhakti. तो इसलिए यहाँ पे जो दूसरे स्कंद में जो पहले उसका जो एक जो मूल जो है सिद्धांत भक्ति के, उसके बारे में बता के धीरे धीरे करके उसको फिर हम है ना गहराई में धीरे धीरे जाते हैं वो भक्ति के बारे में, उनके ज्ञान के बारे में। So this 5th chapter is called the cause of all causes. तो ये जो 5वां अध्याय है ये समस्त कारणों के कारण, वो ये उसका अध्याय का शीर्षक है। Sarva karana karanam, as Brahmaji says. जैसे ब्रह्मा जी ने बताया सर्व कारण कारणम, ये उसके बारे में भी बताया जा रहा है उधर। So here let's focus particularly on this verse. इसलिए आज के हम ये जो श्लोक है इसकी तरफ हम पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे अभी। And here Brahmaji is telling Narada that from the darkness of false ego, the elements are created, the material elements are created. तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि कैसे जो जो भौतिक तत्वों की है ना जो रचना हुई है, वो देखा जाए तो सृष्टि के जो तामसिक जो है जो चीजें हैं उससे उनकी एक्चुअली उत्पत्ति हुई है। Sometimes we are hearing that the Lord creates this world for his own enjoyment, but the real reason for creation of this world is the jiva. तो हम जैसे कभी कभी यहाँ पे पाते हैं कि जो भगवान कृष्ण ने जो ये जो भौतिक सृष्टि का जो उन्होंने जो निर्माण किया वो अपने आनंद के लिए किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे कभी कभी यहाँ भागवत में पाते हैं कि नहीं, उन्होंने अपने जीवों के लिए किया है ये जो भौतिक जगत की जो निर्माण है। So why it is jiva? तो ऐसा क्यों है? लेकिन Because this world exists particularly for the opportunity of the jivas to explore what it is to be separate from God. तो इसलिए जो यहाँ पे जो जीवों को बताने के लिए कि जो भगवान से क्यों जब उससे अलग होके हमारा क्या होता है, हमारा क्या हाल होता है, वो उसकी भी शिक्षा दी जा रही है यहाँ पे। So Prabhupada also explains in the purport that
because of the marginal potency of the Lord, due to false ego, to desire to control over the material creation. That's why this world is created. इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि जो हमारी जो इस भौतिक जो संसाधन है, भौतिक जो जगत है, इसको हम आनंद भोगना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए ये इसकी सृष्टि की एक्चुअली रचना की गई है भौतिक जगत की, ताकि हम जीवों को ये महसूस हो कि हम जो भोक्ता हैं या कौन है, क्या कृष्ण उसके भोक्ता हैं. So this material world is full of danger and pain. तो ये देखा जाए तो ये भौतिक जगत है, बहुत सारे खतरों में, पूरा खतरे ही खतरे हैं और बहुत सारे दर्द और दुख है यहाँ पे. We all know the fact that there is Adidevik, Adibhautik and Adhyatmik. तो हम जानते हैं तीन जो है, जो त्रिय ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक. Adhyatmic clash, yeah, these are the sufferings. तो इसलिए ये जो जितने भी के जो हमको जो क्लेश है, इसके कारण हम सब दुखी हैं. So because of this, we sometimes wonder, how can God create a world where there is suffering? तो कभी कभी हम लोग तो ये है ना बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे ये भगवान ऐसा कैसा जो जगत है ना की रचना कर रहे हैं, ऐसी सृष्टि की जहाँ पे लोग है ना पूरा कष्ट में जीवन बिताएंगे और दुखी रहेंगे वहां पे. And some people question the goodness of God. How can God create something so painful? तो इसलिए कभी कभी जो भगवान की अच्छाइयों के बारे में चर्चा करते हुए ये पूछते हैं लोग कि ये भगवान ऐसा कौन सी ऐसे कैसे कैसे ऐसी सृष्टि की ऐसा जगत का निर्माण करते हैं जहाँ पे लोग है ना पूरे कष्ट में जीवन बिताएंगे और कष्ट में रहेंगे, हमेशा दुखी रहेंगे. And they question, maybe God is not all good. Maybe he's got an evil side to him. तो इसलिए जो भगवान हो सकता है कि है ना उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन उसका जो रचना है, वो रचना तो उनका तो उन्हीं का है, देखा रचना तो उन्हीं के द्वारा बनाया गया है. But if we examine carefully, we will see that there is no evil in God. तो हम अगर बहुत ही सावधानी से देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो कोई भी जो पाप है वो भगवान में नहीं है. How do we understand that? लेकिन हम कैसे समझेंगे कि पाप से ऊपर है भगवान, उनमें कोई पाप नाम की कोई चीज नहीं है उनके पास. So in my own thinking or meditation on this subject, I realized the following. इसलिए मैं जो कभी कुछ चीज की जो पूरा अध्ययन करने के बाद में है ना मेरा जो अनुभूति हुई है उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे. Imagine that God created this world, or Krishna created this world without birth, disease, old age and death. तो कभी कभी आप ऐसा कल्पना करो कि भगवान ने जो सृष्टि की रचना की है उसमें मैं कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे ऊपर है सब, इसमें न जन्म न मृत्यु न जरा न व्याधि, ये सब चीज कुछ भी नहीं है उसमें. We can say we can actually include birth. Let's have just birth, but no old age, no disease, no death. We say we just have birth. तो कभी कभी हम ऐसा अगर हम सोच लेंगे चलो उससे पहले जन्म मृत्यु जरा व्याधि में से एक चीज है, जन्म को ही हमें होना चाहिए, बाकी जो मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं होना चाहिए, तो आपको कैसा लगेगा फिर? Yeah, we just have birth. So and then there is no diseases, no old age, no death. Just imagine that. और कभी किसी कोई बीमारी नहीं पकड़ती है, नहीं कोई बूढ़ा होता है और नहीं किसी की मृत्यु होती है. तो आप सोचिए अभी अगर हम ऐसा कल्पना करें तो क्या होगा पूरे जगत में. Some people ask this question, why God didn't create this world like this, without disease, old age and death? They ask me, is God imperfect or evil? Why did he create the world like that? तो इसलिए जो कभी कभी जो लोग यही सोचते हैं उनको भी हैरानी होती है कि अरे ये भगवान ऐसा जगत की कैसे सृष्टि कर दिया, और ये भी कभी आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है. So if we understand
the reason why we came into this world, then we will know why Krishna created this world like that. अगर हमको ये कारण मालूम पड़ गया कि हम क्यों आए हैं यहाँ इस जगत में, तो हमें ना ये कृष्णा ने ये जगत की रचना क्यों की है उसका भी उत्तर मिल जाएगा हमें. So the reason is we wanted to separate ourselves from God. तो हमारी क्योंकि इच्छा है कि हम है ना भगवान से दूरी रहना चाहते हैं, उससे अलग ही रहना चाहते हैं भगवान से. And we wanted we wanted his kingdom without him. तो लेकिन हम क्योंकि कृष्ण के बगैर भोगना चाहते हैं और उनकी जो भगवान के जो राज्य है उसको हम हड़पना चाहते हैं और उसमें हमको वो नहीं चाहिए, भगवान नहीं चाहिए, कृष्ण नहीं, उसका राज्य चाहिए हमें बस. Yeah. So because we wanted his kingdom without him, this is called Matsarya. The great devotees, they call this quality Matsarya or envy. इसलिए जो ये जो एक जो गुण है, जो अगर ऐसा करते हैं कि हम भगवान को बाजू में रख के और आनंद भोगना चाहते हैं, तो इसको एक जो कहा जाता है, ये एक जो गुण है हमारे में जो ईर्ष्या है. अगर हम ऐसा करते हैं जहाँ कि हम भोगना चाहते लेकिन भगवान के बगैर, तो यही ईर्ष्या का ही एक रूप, ये ईर्ष्या ही है देखा जाए तो हमारे हृदय में. Yeah. So because of this envy, we take birth into this material world. और क्योंकि हम ना भगवान से क्योंकि ईर्ष्या की, इसके कारण ही हमें यहाँ भौतिक जगत में हमको भेजा गया. Now imagine that we live in this world and there is many envious people, but none of us can actually die. None of us can get old and die, and we all stay eternally here in this world with all these other envious people. इसलिए कभी हम ऐसी कल्पना करें कि है ना यहाँ पे कोई नहीं है, सब है ना, और हम लोग है ना सब हम अपना मतलब वर्चस्व चाहते हैं हम इधर यहाँ पे कि हमारे वर्चस्व चले, और उसमें कई लोग तो ईर्ष्यालु भी हैं अभी. तो हमें लगता है कि अभी मौत नहीं हो, किसी की भी मृत्यु नहीं हो, तो ऐसे क्या होगा. अभी बहुत सारे ईर्ष्यालु हैं जैसे संसार में, वो ईर्ष्यालु अगर वो नहीं मरेंगे तो उनकी संख्या और बढ़ती जाएगी, तो फिर हमारा क्या हाल होगा. So when there is envious people, there is always conflict, fighting. There is always some offenses, some emotional aggression is there. इसलिए कभी कभी ये जो हमारा कभी जो ये जितने भी जो यहाँ पे होते हैं हमारे जो भावुक हो जाते हम लोग हैं, और भावुकता में आके हम उग्र रूप धारण कर लेते हैं, हम उग्रता आ जाती है हम में, है ना. तो ये सब जितने भी जो अनर्थ हैं ये सब है ना हमारे हृदय में रहते हैं. So if we live eternally in a world surrounded by other people's envy, and we also have some envy, and especially if we don't know about Krishna, that envy is greater. इसलिए जो हम सब वर्षालुओं के साथ में उनका संग रहता है हमारा, तो हमें भी वही जो भावना हमें भी हो जाती है, वो गुण है, जो अवगुण जो है वो अवगुण हमें भी आ जाता है. जो विशेषकर जो क्योंकि ये जो वर्षालु लोग क्योंकि कृष्ण को नहीं मानते हैं, इसके लिए हमें भी वो जो गुण है हमें भी आ जाते कि हम भी कृष्ण को नहीं मानना चाहते ईर्ष्यावश. So and if we live with these envious people, it's very painful. अगर ये जो जितने भी जो ईर्ष्यालु लोग अगर इस संसार में रह जाएंगे, तो ये सबके लिए कष्टदायक हो जाएगा, बहुत बहुत पीड़ा पहुंचाएंगे लोग ईर्ष्यालु लोग. And imagine you have to live eternally with not being able to actually experience complete happiness, the way you experience your happiness as a soul, as jiva. Imagine you have to live eternally with this. Sometimes there is aggression, sometimes there is pain, confusion. You cannot be fully happy the way you want to.
इसलिए जैसे हम लोग अगर यहाँ पे रहते हैं, जब भौतिक जगत में रह जाते हैं हम लोग यहाँ पे, तो हमें जो जितने भी जो भौतिक जगत की है कि हमें कभी कभी पीड़ा होती है, कभी हमसे कोई अलग हो जाता है, अपने जो विरह होता है किसी से हमारा, बहुत सारी जो चीजें हैं जो हमें जो मतलब और भी ज्यादा हमारे हृदय को पीड़ा पहुंचाएगी, जो मतलब अगर भौतिक जगत में हम रहेंगे तो ज्यादा समय। So Krishna created this world with disease, old age, and death to be like alarm clocks that can teach us that something is wrong, that our being in this world, there is something wrong with us being here. इसलिए जो कभी भी जैसे हम ना कभी घड़ी की तरफ भी देखते हैं तो हमें ना कभी ऐसा लगता भी है कभी कभी कि तो हमें ना इस जगत में एक्चुअली फालतू में ही आए हैं, ऐसा कोई इसका कोई क्या उद्देश्य है, क्यों हम आए, ये कभी कभी हमें लगने लगता है। ये There is a saying that pain is the first guru of man. Pain is the first guru of man. अच्छा, तो ऐसी भौतिक जगत में कहा गया है कि जो हमें जो जब दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो पीड़ा एक्चुअली पहला गुरु है हमारा। So in other words, pain is a very good thing. तो इसके लिए दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जो दर्द है ये अच्छी चीज है देखा जाए तो। Because pain makes us think, what am I doing in this world? I don't want pain, but the pain is forced on me. तो इससे जब ये हमें पीड़ा होती है, हम पीड़ित होते हैं, तो तब हमें सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि हमें ये क्यों, मैं ये पीड़ित हूँ, अभी क्यों मुझे पीड़ा आ रही है, मैं तो उसके लिए क्या पीड़ा सहन करने की जगत में आया हूँ क्या मैं। Just like if you touch fire, you experience pain. तो इसलिए जब हम अगर हमारा हाथ अगर हम छू लेते हैं गलती से भी कभी अग्नि को, तो हमें ना दर्द होने लगता है हमें। So the pain actually is good. तो इसलिए देखा जाए तो ये जो दर्द है, जो पीड़ा है, ये अच्छा है देखा जाए तो हमारे जीवन के लिए। Because if you didn't have the feeling of pain, your hand would actually burn in the fire. इसलिए अगर आपको अगर ये पीड़ा का कभी अनुभूति नहीं होती थी आप में, अगर ये आपके शरीर में पीड़ा क्या होता है और पीड़ा की अनुभूति, तो ये तो आप पूरा हाथ ही जला देते थे आप, तो फिर आपके हाथ पूरे जल ही जाता था आपका हाथ तो। So when you put your hand in the fire and when you feel the pain, you immediately remove it. तो इसलिए जब हम ना जब अग्नि में जैसे हम हाथ डालते हैं और हम पीड़ा होती है, तुरंत ही हम अग्नि से हाथ को बाहर निकाल देते हैं पीड़ा के कारण। So that's why this pain, disease, old age, and death, it's there to make the soul thoughtful, to make the soul philosophical. तो इसलिए जो ये जो चार चीजें हैं, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, एक्चुअली जो ये आत्मा को है ना एक विचारशील बनाती है, और हमें विचार आने लगता है कि क्या है करना है, क्या नहीं करना है, वो विचारों के कारण हमें सुधार आता है हमें। So Krishna didn't put this pain here in this world to torture us, but he wanted the pain to serve us as a awakening factor, to wake us up from the sleep. तो इसलिए ये जो देखा जाए तो जो हम जो सोया हुआ रहता है, जो जब कोई आदमी और जब जागता है, तो वैसे ही जो हमारे जो ये दर्द है, जो पीड़ा है, ये हमें भी जो सोया हुआ ही हमारे आत्मा को, हमारे सोए हुए मन को वो जगाता है देखा जाए। जो आध्यात्मिक रूप से जो सोए हुए हैं उनके जागरण के लिए अच्छा है ये जो दर्द है, हमारी पीड़ा है जो। Sometimes when the mother gives to the child some bitter medicine, it's very bitter, but when the child takes the bitter medicine, then he or she get cured. इसलिए कभी कभी जो है ना, कभी कोई माता है ना, कोई किसी को अगर दवा देती है, लेकिन बहुत कड़वी दवा है, तो कड़वी दवा वो नहीं लेता है, फिर उसको जबरदस्ती क्यों देती है, क्योंकि उसका कारण ये है कि वो है ना उसको मालूम है कि इसकी जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी दवा पीने से, इसलिए वो बीमारी मुक्त करने के लिए हमें जबरदस्ती वो बच्चे को दवाई लाती है, कड़वी दवा भी। So the mother is giving the medicine out of love. She's not giving out because she is evil. It's bitter medicine, but she's giving it out of love. तो इसलिए जो देखा जाए तो ये जो दवा ये भले कड़वी है, वो कष्टदायक है, उसको कष्ट दे रही है, लेकिन फिर भी उसको इसलिए दे रही है क्योंकि उसका प्रति प्रेम है, उसका प्रेम को, माँ का जो प्रेम है बच्चे के प्रति, उसको दर्शाता है एक्चुअली ये। So in the same way, disease, old age and death
placed from the Lord in this world so that we could actually get cured from ahankar, from the false ego. तो इसलिए जो हमारा जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब क्यों हमें देते हैं, देखा जाए कि ताकि हम है ना ये अपने जो झूठा जो अहंकार है, झूठ मूठ का अहंकार है, इससे हम मुक्त हो सके. So pain is the first guru. इसलिए जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो हमारे पहला गुरु है. And then we get the mercy of the devotees. इसके बाद फिर हमें ना भक्तों की कृपा हमें मिलती है फिर. And by the devotees we can learn the message of Shabda Brahman, the Srimad Bhagavatam. तो इसके कारण हम जो भक्तों की कृपा से हमें ना जो श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है, जो शब्द ब्रह्म है, वो हम फिर सुनते हैं हम लोग. So by learning the message from Srimad Bhagavatam, we further become awakened and more awakened. So pain just wakes us a little bit up, but the message of Guru and Sadhu makes us fully awakened. इसलिए जो ये जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो कष्ट है, इसका जो संदेश है एक्चुअली ये देखा जाए तो हमारे लिए लाभकारी है, हमारे लिए उपयोगी है ये. और जो साधु इसके द्वारा हमें है ना, इससे हम जो सोई हुई है जो हमारे जो है आत्मा, उसको जागृत करता है, उसको जगाता है वो, और उसमें हम लोगों को सावधान करता है उससे. And real sadhu and real guru, they are those who can teach you how to love Krishna. तो इसलिए जो सच्चे साधु है और जो सच्चा जो गुरु है, वो आपको ये सिखाता है कि हम कृष्ण से कैसे प्रेम करें. And we can love Krishna when we know that Krishna is completely good, is all good. There is no evil in him. इसलिए जब हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो जब हमें मालूम पड़ता है वो एकदम शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें कोई पाप का कोई नामो निशान नहीं है. You know, Parasara Muni, he explains that Krishna has 6 qualities. तो इसलिए आपको मालूम है कि जो पाराशर मुनि ने बताया कि कृष्ण में है ना 6 जो गुण है कृष्ण के में. So these qualities, he is the most beautiful, is the most knowledgeable, is the most powerful, is the most wealthy, he is the most famous, and he is the most renounced. These are the 6 qualities. उन्होंने जो गुण बताया है कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा वैरागी है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा धनी है. और तो ये सब है ना, उन्होंने जो 6 जो गुण है भगवान के, जो पूर्ण रूप में है उनमें, इसलिए उसको भगवान कहते हैं, ये उनके बारे में बताया हम. But imagine if someone has all these qualities, these 6 qualities, to the fullest extent. Imagine, he's the most beautiful, the most wealthy, most powerful, but he's also evil. Imagine that. लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति से, आप किसी से मिलते हैं ऐसा जिसमें कि 6 के 6 गुण है पूरे, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा वैरागी है, वो पूर्ण रूप से वैरागी है मतलब, और उसके बाद ये पूर्ण रूप से ज्ञानी है, पूर्ण ऐश्वर्यशाली है वो. तो लेकिन आप सोचो इसमें लेकिन पाप है पूरा, वो पापी है, तो आप सोचिए आप क्या सोचोगे उसके बारे में. Yeah. What is the word evil in Hindi? पापी, sinful person. Cruel rather. क्रूएल में निर्दयी है, निर्दयी in Hindi means निर्दयी. Yeah. क्रूएल means निर्दयी है, suppose. Not sinful but cruel. Yeah. हाँ, तो क्रूएल है मतलब वो निर्दयी है, उसमें दया नहीं है कुछ भी, निर्दयी है. तो क्या सोचोगे आप उसके बारे में? Okay. So imagine that someone is very beautiful but very cruel as well. Can you love such a person? कभी आप ऐसा देखिए, कोई व्यक्ति मिला आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उसमें बहुत निर्दयी है, वो दया बिल्कुल नहीं है उसमें, तो आपको क्या अच्छा लगेगा व्यक्ति वो? Most people will not love him. तो ज्यादातर लोग जो है ना उससे प्रेम नहीं करेंगे, देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति से. So Krishna is all these things
most beautiful, most powerful, most wealthy, but he's also the most loving. He is absolute goodness. There is no evil within him. तो इसलिए देखा जाए तो कृष्णा में ये 6 के 6 जो ऐश्वर्य सब है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा खूबसूरत है, सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा वैरागी है, तो सबसे बड़ा ज्ञानी है वो। लेकिन उनमें अगर ये जो सब कुछ होने के बाद में अगर ये नहीं है, मान लो जो उनमें निर्दयता है, दया नहीं है उनमें, तो आप क्या क्या सोचोगे तब? आपके ऊपर क्या बीतेगी? So the soul is actually responsible for its suffering. इसी जो आत्मा है हमारी, वो ये जो कष्ट है इसका जो इसके लिए जिम्मेदार आत्मा है, कष्ट के लिए। Because of the soul being eager to be separate from God, from Krishna, because of this Matsarya, then he is suffering in this world. इसलिए जो क्योंकि मात्सर्य जो हमारा जो इच्छा है जो है हमारी कृष्ण के प्रति, इसके कारण हम लोग कष्ट में जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं हम। So this world is it's like a prison. It's like Durga, prison house. तो देखा जाए तो ये जो ये विश्व है, ये इसको दुर्ग कहा गया, दुर्ग है ये, और ये जेल है ये, देखा जाए तो। But in the prison house, everyone goes because of his own free will. No, you know, if there is an honest government, no honest man will end up in prison. Only someone who deserves to be in prison. So in this world, we all have a problem. That's why we're here. जैसे कि कोई भी जो व्यक्ति है, अगर वो जब कोई अगर जो अनुशासन में नहीं रहता है, कोई अपराध करता है, तो उसको वो जेल में जाता है ना। तो कोई मतलब उसके कारण वो खुद की, क्योंकि उसकी इच्छा थी, इसलिए उन्होंने अपनी इच्छा का जो दुरुपयोग किया, उसका जो उसमें जो थोड़ी जो स्वतंत्रता थी, भगवान उसका दुरुपयोग किया, उसके कारण वो अपराधी बना और अपराध किया उसने और जेल में गया। तो वैसे ही हम लोग भी जो इस विश्व जगत में, हमने भी कुछ ना कुछ अपराध किया, इसलिए हम इस जगत में आए हैं, हम लोग सजा भुगतने के लिए। So the second point Prabhupada is making in the purport is that only Krishna is the enjoyer. How do we understand that? तो इसलिए जो एक्चुअली देखा जाए तो जो कि कृष्णा ही भोगता है, लेकिन हम ये प्रभुपाद ने लिखा कई जगह पर, लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे हम, ये कृष्णा ही भोगता है। Some person may say God is like a dictator. He's trying to enjoy everything and we cannot enjoy without him. They can start accusing. इसलिए कुछ लोग है ना ऐसा भी बोल सकते हैं भगवान के बारे में, भगवान तो तानाशाह हो गया यार, ये तो वो बोलता है कि तुम है ना मेरे बगैर तुम है ना इस संसार में आनंद नहीं ले सकते हैं, मैं आनंद लेना तो मेरे साथी लेके चलना पड़ेगा। ये तो एकदम तानाशाही हो गई तो। But the problem is that we are part and parcel of Krishna. We are his energy and we cannot enjoy independently. देखा जाए तो क्योंकि हम कृष्ण के हैं, एक अंश है, तो इसलिए हम ना स्वतंत्र रूप से हम आनंद का आनंद नहीं ले सकते, संसार में हम आनंदित नहीं रह सकते बगैर कृष्ण के, हम क्योंकि हम उनके अंश हैं, हम कृष्ण के। So it's explained in the Vedic literatures, the following verse: Vishnu Shakti paraprokta kshetra gyakya tatapara avidya karma samgaya triti shakti ishate, which means that Vishnu has many energies that are summarized into 3 and they all emanate from him. तो इसलिए जो जैसे बताया गया श्लोक में कि जो विष्णु की जो बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं, लेकिन उसमें 3 जो मुख्य शक्ति है जो कि उनमें से ही वो निकलती है, भगवान विष्णु के शरीर से निकलती है। Yeah, they are summarized into 3 and they emanate from him. तो 3 शक्तियां उनमें से निकलती है और ये 3 जो संक्षिप्त में जिनका वर्णन किया गया है, जो उनके शरीर से निकलती है 3 शक्तियां। So because we are part of Krishna, we should be cooperating with him, and when Krishna is enjoying, we are also enjoying, because the part enjoys when the whole enjoys.
तो इसलिए क्या होता है कि जैसे कि क्योंकि हम जब भगवान जब वो करता है आनंद आता है उनको, तो वैसे ही क्योंकि हम उसके अंश हैं, तो इसके अंश होने के नाते हम भी स्वतः ही हम भी आनंद में आ जाएंगे, हम भी खुश रहेंगे, वो खुश है और हम भी खुश रहेंगे। ये हमें समझना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। So there is this verse in Bhagavad Gita, Bhoktaram Yagya Tapasam Sarva Loka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Gyatva Gyantim, how was it? Shantim Richati, Gyatvam Shantim Richati. So, so Krishna there is explained to be the enjoyer of everything, but he is not an exploiter. He is enjoyer because he is the complete whole, and there is nothing outside of him. So he is actually the enjoyer. तो देखा जाए तो यहाँ पे जो कृष्ण ऐसा नहीं बोल रहा है इस श्लोक में भगवद गीता के कि भाई है ना मैं ना कोई शोषण करना है उसको, मतलब उनका स्वभाव में शोषण नहीं है कि मैं सबका शोषण करूं। उनका तो बस क्योंकि वो पूरा पूर्ण है, एक्चुअली कृष्ण देखा जाए तो पूर्ण, तो इसके लिए कुछ भी जो चीज जब कोई पूर्ण होता है तो उसका तो भोग लेता ही है वो आदमी जब पूर्ण होता है। तो कृष्ण को खुद स्वयं पूर्ण है, इसलिए वो भोगता है, वो स्वतः ही भोगता के उसमें श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम उनके अंश हैं, तो अंश तो जब हम उसके साथ में जब हम मिलते हैं उनके साथ में और उनके, तो हम भी स्वतः हम भी उनके कारण हम में भी उनका जो आनंद का जो एक है, हमारे पास भी एक अंश हमारे पास आ जाता है आनंद, क्योंकि हम उनके अंश हैं, इसलिए हम खुश रहते हैं फिर। So Krishna is the enjoyer, but the soul, the Atma, when we serve Krishna with love, we give pleasure to Krishna, and Krishna gives pleasure to the Atma. So there is mutual enjoyment. तो इसलिए क्योंकि हम अंश है, तो इसलिए जब हम उसकी सेवा करते हैं उनको, और सेवा से जब उनको आनंद देना चाहते हैं अपनी सेवा से, तो जब वो आनंद लेते हैं जब, तो क्योंकि हम उनके अंश होने के नाते में स्वतः ही वो आनंद हमारे पास भी आ जाता है, वो हम भी फिर आनंदित रहते हैं उनके अंश होने के कारण। Because there is goodness, Krishna is good, and the jiva, when the jiva is a devotee, is also good, and when there is pure love and goodness together, there is enjoyment for both parties. क्योंकि उनके अंश हैं, तो इसलिए जो उसमें जो भी कुछ मतलब एक जो सात्विकता है, तो सात्विक प्रवृत्ति जब उनमें है, तो वो सात्विक प्रवृत्ति जो है ना, हम उनके संग में आने के कारण हमें भी वो सात्विक प्रवृत्ति आ जाती है हमें। तो जो भी व्यक्ति जब आत्मा सात्विक प्रवृत्ति में सात्विकता आ जाती है उसमें, तो स्वतः ही उसमें भी आनंद आएगा, तो वो भी खुश रहेगा इसके लिए। Because we are part of Krishna, we cannot enjoy separate from him. That is the fact. क्योंकि भगवान के ही अंश है, इसलिए हम भगवान से अलग होकर हम कुछ भोग, कोई भी चीज का भोग नहीं कर सकते हम। Just like Prabhupada explains, like the arm is part of the body, the arm cannot enjoy without the body. तो जैसे प्रभुपाद ने इसको समझाया कि जैसे हमारा जो ये है बाहें हैं हमारी, तो बाहें जो है हमारा जो हाथ है, ये सब जो है ना हमारे शरीर के अंश है। अगर ये शरीर से अलग होकर सोचेंगे कि हम अलग हो जाएं तो हम खुश रहेंगे, तो नहीं हो सकता। वो शरीर से अलग उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है, उनका कोई भोग नहीं कर सकते किसी चीज। जब तक शरीर से इसका कनेक्शन है, उसके साथ में उसका संबंध है, तब तक वो भी भोग करेगा बाकी शरीर के अंगों के साथ साथ। So it's absolutely natural for the soul to serve Krishna. इसलिए जो ये है ना एक आत्मा के लिए है ना, ये जो है ना एक स्वभाव है, मूलतः उसका मूल रूप से उसका स्वभाव ही है कि कृष्ण की सेवा करना। And the fact is that Krishna also wants to serve the soul. और एक सच्चाई ये भी है कि जो कृष्णा भी जो आत्मा है उनकी सेवा करना चाहते हैं। In fact, if we look at it objectively, Krishna is the greatest servant as well. तो अगर बहुत ही उसको अगर गहराई से देखा जाए, तो कृष्णा तो देखा जाए तो वो भी सेवक ही है, देखा जाए तो वो भी सबके जीवों की सेवा में लगे हुए हैं भगवान भी। Because he provides everything for the jiva. तो क्योंकि जीव के क्यों सबसे बड़े सेवक माने गए हैं? क्योंकि वो जीवों को सब कुछ चीज देते हैं, जो भी चीज है उनके पालन करते हैं। पालन करने के लिए जो भी उनका जो चीजों की आवश्यकता वो सब उनको प्रदान करते हैं। Krishna doesn't actually need the service of the jiva.
देखा जाए तो कृष्ण को है ना जीवों की कोई सेवा नहीं चाहिए उनको, because he's self-satisfied. क्योंकि वो आत्मा संतुष्ट है, आत्मतुष्ट है वो। When we offer some service to Krishna, it's just like we are offering some flame to the sun. तो इसलिए जब हम कृष्ण को जब हम सेवा करते हैं तो जैसे कि हम है ना कुछ चीज हम दे रहे हैं अपने पेट को, जैसे हम कुछ चीज दे रहे हैं, उसको खिला रहे हैं हम लोग। So Prabhupada is saying Krishna is self-satisfied and he's complete. He's always satisfied. तो इसलिए कृष्णा जो हमेशा जो आत्मतुष्ट है वो हमेशा से सही संतुष्ट रहते हैं, वो हमेशा तुष्ट रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं हमेशा वो। But out of kindness, he accepts our service. लेकिन देखा जाए तो उनको हमारी सेवा की आवश्यकता नहीं, लेकिन उनके दयावश करुणावश वो हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं कृष्णा। And out of love, Krishna serves us himself. और प्यार के कारण वो कृष्ण खुद स्वयं हमारी सेवा करते हैं। So this is the actual position of Krishna. He is not a dictator. He is all good. He is pure goodness. तो इसलिए जो कृष्णा देखा जाए तो जैसे कि लोग बोलते हैं तानाशाह है, तो तानाशाह नहीं है, वो है ना एक शुद्ध सत्व में है, वो शुद्ध सत्व गुण में है वो पूर्ण रूप से शुद्ध सत्व में है वो। And the third point Prabhupada makes in this purport is through the power of sound, the jiva is awakened. तो ये तीसरा चीज जो श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि जो ध्वनि के कारण ही जो जीवन में जागृति आती है। So the sound, the mantra, for example, is the sound, the subtle sound of Krishna. इसे जो मंत्र है वो एक्चुअली देखा जाए तो वो उसका सूक्ष्म रूप जो रूप है भगवान कृष्ण का ही। It's a representation of Lord Krishna. और ये जो शब्द ध्वनि है, ये जो उनका नाम की जो शब्द ध्वनि है वो कृष्ण का ही प्रतिनिधित्व करती है वो। So Krishna appears as a Shabda Brahman. इसे कृष्णा ने शब्द ब्रह्मन के रूप में प्रकट हुए हैं। There is also Daru Brahman, the deity. तो दूसरा फिर दारू ब्रह्मन है जिसको अर्च वगैरह कहा जाता है। Yeah, and he gives us in that way his blessings and mercy. तो इसलिए जो हमें है ना अपनी जो कृपा है, अपनी जो आशीर्वाद वो हमें देते हैं कृष्णा। And Lord Chaitanya, he teaches the jiva in Kali Yuga that the chanting of the holy name is the greatest benediction to humanity to connect with the Lord. इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो है ये सबसे बड़ा वरदान है आज की मानवता के लिए, क्योंकि इससे हम आसानी से कृष्ण का इसका जो भूला संबंध है, टूटा हुआ संबंध, उससे कृष्ण जीवों को हम उसका वापस उस संबंध से जोड़ सकते हैं। ये सबसे बड़ा हमारा जो परोपकार यही है कलयुग में। So what is the verse from Shikshastakam? Chaito Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vikaranam Videvadu Jivanam Anandam Buddhir Vardanam Pratipadam Purnam Rita Swadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam, which means that this Shri Krishna Sankirtan will give us the bliss that we're always looking for, and this bliss is ever expanding, always growing when the heart is pure. Chetu Darpana Marjan. इसलिए जो यहाँ पे बताया गया है चैतन्य आजरम शिक्षाष्टम कम का जो पहला श्लोक में कि जो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान का जो पवित्र नाम है, ये हमें ना ऐसा आनंद देता है, वो हमेशा बढ़ते जाने वाला। वो हम जितना ज्यादा वो जपा करेंगे उतना ज्यादा हृदय हमारा शुद्ध होता जाएगा, जितना हृदय शुद्ध होगा उतना ज्यादा हमारा आनंद बढ़ता ही जाएगा, और ये कभी कम नहीं होने वाला आनंद। जितना ज्यादा हम उसका नाम जप करते हैं उतना ज्यादा हृदय शुद्ध होकर और ज्यादा आनंद हमारा बढ़ता जाएगा, कभी कम नहीं होने वाला वो। So Prabhupada is saying the devotees should always be aspiring to be in constant touch with the Lord through the Maha Mantra. तो इसलिए जो है ना श्रील प्रभुपाद यहाँ पे सबको मतलब सिफारिश करते हैं कि है ना हम भगवान के संग में हमेशा रह सकते हैं अगर हम हरे कृष्ण मंत्र भी हम लगातार हम करते रहेंगे तो
हमेशा भगवान हमारे साथ ही रहेंगे। And we should always meditate on Shabda Brahman, hear the pastimes of the Lord. तो हम हमेशा है ना शब्द ब्रह्मा का जो है उसका उसके ऊपर ध्यान कर सकते हैं, और यही जो है ना भगवान से अभिन्न है वो, और इस तरह से हम उसका संग करते भगवान का हम हमेशा आनंदित रह सकते हैं। We can always hear Srimad Bhagavatam. और हमेशा हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर सकते हैं। Even sometimes if we are busy, we can hear the narration of Srimad Bhagavatam. There is on YouTube, some devotees have read the dramatic narration of Bhagavatam from 1st to 12th canto. We can always. तो इसलिए बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही खूबसूरत इस तरीके से हम जैसे कि ड्रामा, एक नाटक में बहुत अच्छे तरीके से किसी चीज को हमें प्रस्तुत किया करके हमको समझाने के लिए वो उसको आकर्षित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। वैसे ही जो कुछ भक्तों ने ना पहले से लेकर 12वें स्कंद तक है श्रीमद् भागवतम के बहुत सारे जो विषय हैं उनको बहुत अच्छे ढंग से उसमें प्रस्तुत किया गया है, बहुत ही रोमांचकारी तरीके से प्रस्तुत किया है, तो हम वो भी देख सकते हैं। So we can try to read every day Srila Prabhupada's books also. Even if it's one verse, one purport, of course, if we can read more is better. But even if we say I don't have much time, we should try to read at least one verse, one purport a day, hopefully in the morning and maybe one in the evening. So in this way we have some meditation to think about Krishna. इसलिए हमारे पास अगर समय की कमी भी है, समय का अभाव भी है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक ही अगर श्लोक पढ़े, उसका अनुवाद और तात्पर्य पढ़े, सवेरे एक शाम को पढ़े तो भी काफी है। हम लोग कम से कम कृष्ण के बारे में से विचारशील हो जाएंगे, कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे हम लोग। When we actually read Shastra, that improves the quality of our chanting. That is for sure. हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो उससे हमारा जो जपा का जो गुणवत्ता वो में सुधार होता है। And the more our consciousness is absorbed in the Bhagavatam, the more the chanting of the holy name is more concentrated. इसलिए हम जितना ज्यादा हम उसको भागवतम का श्रवण करेंगे उतना ज्यादा हमारे जो ध्यान है ना लगेगा ज्यादा मंत्र जप करने में भी। So Shravanam is the foundation and then Kirtanam. श्रवण में जो हमारा नींव है उसके बाद फिर दूसरा चीज कीर्तन आता है उसके बाद। And I'll tell you something interesting, that every time we read Prabhupada's books carefully, we will always find something that will nourish our bhakti. Always we'll find something. तो इसलिए हम अगर हम जब भी कुछ भी थोड़ा भी पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों में से भागवत में, तो हम देखेंगे कभी भी हमें है ना वो चीज है ना हमारी भक्ति में को और पुष्ट करता है, भक्ति को और बढ़ाता ही हमारा उससे। Sometimes we feel, oh, I've read these books 5 times. I read Srimad Bhagavatam 5 times. What new I can learn from Srimad Bhagavatam? But the fact is that if we read carefully, consciously, we will always find nectar, because the Bhagavatam is alive, and we will always experience bliss, transcendental bliss. वैसे कभी कभी हमें लगता है कि आप 5 बार मैंने ये पुस्तक पढ़ी है, 5 बार भगवद गीता या भागवतम 5 बार पढ़ लिया, तभी क्या है उसमें, लेकिन नहीं, लेकिन ये है कि हमारा उससे जो चेतना है वो शुद्ध होती है हमारी, और शुद्ध होने के कारण हमें है ना एक अलग अनुभूति, अलग अलग टाइप का अनुभव होता है, नया नया अनुभव होती है, नई नई अनुभूति होती है। ये है ना पूरा 100 श्योरली मतलब एकदम निश्चित है, ये पक्का है कि हमारा जो चेतना है वो उसमें ज्यादा शुद्ध होती है और ज्यादा हम आनंद आता है उसमें। So my humble suggestion is we should always try to read Prabhupada's books carefully, systematically. तो हम इसलिए प्रभुपाद की इसलिए किताब को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए और बहुत ही अच्छे ढंग से हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए उसको। Yeah, he's got a special bhav that comes from his teachings. श्रील प्रभुपाद के पास कुछ विशेष भाव है जो कि उसकी शिक्षाओं से हमें मिलता है, उनकी शिक्षाओं से आता है हमारे पास। So we should never forget that connection with his divine grace. इसलिए कभी भी हमें ना श्रील प्रभुपाद से अपना जो संबंध उसको कभी भी हम
खत्म नहीं करेगा, कम नहीं करेगा उनसे संबंध को. And the final point, short point I'll just make, is when I was looking at this verse, actually I always look at every verse carefully, the Sanskrit, and I always find at least 3 or 4 words that are the same as Bulgarian words. इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने देखे तो इसमें जो कुछ शब्द हैं वो बार बार आए हैं, और भी जगह पे वो आए हैं. तो ये कुछ शब्द हैं वो मुझे लगा कि कई जगह और भी आए, यहाँ पे भी आए, वो बार बार उसका जो पुनरावृत्ति हो रही है वो शब्दों की. Yeah, these words are the same like in my own language, Bulgarian language. तो मुझे लगता है कि ये जो शब्द हैं वो मेरी भाषा में भी यही शब्दों का इस्तेमाल होता है. So here is the word tamasat. I told you about it. Is the same. जो तामसा है वो भी जो मैंने बताया आपको, ये मेरी भाषा में भी तामसा ही बोलते हैं इसको. Then the word nabaha, it means sky in my language as well. तो नाभा जो है, नभ बोलते हैं, जैसे हम लोग आकाश होता है उसका मतलब, तो वो भी इनकी भाषा में भी नभ ही बोलते हैं उसको, नभ. The word tasya also, we say tazi. We say in our language tazi. In Sanskrit, tasya, tazi. It's very close. मैंने जो तास्य जो संस्कृत में, वैसे हम जो ताजी बोलते हैं हम उसको ताजी. तो दोनों शब्द आपस में मेल खाते हैं. And the word guna also, we used to have ladies with that name before, guna. Like we have Guna Mala, for example. We also had in Bulgaria ladies. Now it's very uncommon, but some of the older ladies were called Guna. तो पहले जमाने में कि हम जो ज्यादातर जो गुण से स्टार्ट होता रहा, हमारे जो हमारे जो औरतों का नाम है गुणमाला ऐसे करके. तो ऐसे करके जो पुराने समय में जो ये गुण से ही उनका नाम आरंभ होता था ज्यादातर औरतों का. So I'm always trying to build the bridge between India and Bulgaria, because we have a lot in common that is now forgotten, but we need to revive that relationship. तो मैं हमेशा ना जो हमारा जो भारतीय जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति और हमारी जो बुल्गारी है, इसके बीच में मैं हमेशा जो संबंध स्थापित करना चाहता हूँ और जोड़ना चाहता हूँ इसको, जो दोनों को. और मुझे लगता है कि दोनों में बहुत सारी चीजें जो दोनों में समानता है, बहुत सारी चीजों में समानता मिलती है. Yeah. You know that in Delhi you have a school that is named after the father of the Bulgarian Revolution. Do you know that? तो दिल्ली में एक स्कूल है, और स्कूल का नाम है एक्चुअली जो जब वहाँ पे क्रांति हुई थी, क्रांति के जो पिता थे, क्रांति जो जिन्होंने आरंभ किया था, क्रांति का जो शुरुआत किया था, उसके नाम पे है ये स्कूल भी का नाम देखा जाता. Just like Gandhi ji was in India, so Yes. we have a person who is called Rakovsky. तो जैसे यहाँ पे गांधी था, वैसे हमारे यहाँ में एक आदमी, इसका नाम था रिकोस्की. Yeah. So this Rakovsky, he was the first European who was defending the cause of India against the British Empire in the 19th century. तो ये 19वीं सदी में यही जो आदमी था जो है ना हमेशा जो इंडिया को जो है ना हमेशा वो है ना उसका मतलब उसके मतलब पक्ष में बोलता था, और बोलता था मतलब कि जो ब्रिटिश लोगों को, भाई आप लोग है ना जो जाओ यहाँ से, भाई इनको छोड़ो, अभी स्वतंत्र करो इनको, क्यों आप इधर हो. So he was studying the Vedas and he was studying Sanskrit, and he was looking for the relationship between Bulgaria and India, and he found that we're related cultures. इसलिए वो क्या बहुत सारे वो जो वेदों का अध्ययन करता था, बहुत सारे हमारा साहित्य था, उपनिषद वेद थे, जितने भी संस्कृत का पूरा अध्ययन करता था. और वो हमेशा वो जो बुल्गारिया की संस्कृति और हमारी जो वैदिक संस्कृति जो है भारत की, उनके बीच में तालमेल करने का प्रयास करता था, और कि हाँ दोनों को मैं तुलना करके उसको ऐसा मतलब उस निष्कर्ष पे पहुंचता था कि दोनों में बहुत सारी समानता है, दोनों संस्कृतियों में. Just 1 or 2 more minutes and I'll end. He actually wrote about the abuse of the British
over the people in the Sikh fighters. You know, the Sikhs, they used to fight against the British Empire. So Rakovsky was defending the Sikhs in their liberation struggle. And then in Europe, they wrote to the British Prime Minister and they told him to stop abusing people in that way. So then the British stopped abusing the Sikhs. And that's why Rakovsky is a national hero of India. And that's why there is a school in Delhi. तो देखा जाए तो उस टाइम में क्योंकि ये सिख लोगों से काफी उनका वो झड़पें होती रहती थी जो ब्रिटेन के साथ, क्योंकि सिख लोग चाहते थे कि अब हमारी जो स्वतंत्रता दो, और उसके कारण उनका उनसे साथ हमेशा विरोध प्रदर्शन होता रहता था उनका। लेकिन ये जो है ना, इसलिए गुस्सा होते हैं सिख लोगों के ऊपर, जो ब्रिटिश जो अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोग उनसे इसलिए बहुत ज्यादा उनको है ना यातनाएं देते थे, उनको प्रताड़ित करते थे। तो इसलिए जो यूरोप में जो ये जो है राकोव्स्की जो है, उन्होंने और सबने मिलके है ना एक चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री को, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, कि आप है ना ये सिखों के ऊपर जो आप जुल्म कर रहे हैं, सिखों के ऊपर इतना यातना दे रहे हो, देना बंद करो, और ये गलत है एकदम, ये मतलब इंसानियत के विरोध में है ये, आप उनको यातना मत दो सिखों को। Yeah, he heard that the British used to tie the soldiers on the cannon, and they used to blow the cannon through the soldier. Can you believe cruelty? तो उस टाइम में क्या होता था कि वो जो सिखों को है ना, वो जो तोप है, तोप के मुंह पे उनको है ना, मुंह पे उसको है ना बांध देते थे, और उसको जो तोप में गोला डाल के उसको उड़ाते थे। तो ये तो कितना निर्दयता क्या कि वो जिंदा आदमी को आप जो है ना ऐसा उसको मतलब जिंदा जैसे कोई जला रहे उसको, तो इतनी ज्यादा निर्दयता जो है ना उन्होंने उसका विरोध किया था। यूरोप में बहुत ज्यादा विरोध हुआ था इसका। So when Rakovsky raised his voice, and the British Empire stopped doing that, actually stopped killing people like that. तो जब राकोव्स्की ने जब इसके आवाज उठाई थी, तो उसके बाद जो ब्रिटेन की जो सरकार ने ये सब है ना लोगों को इस तरह से जो तोप में बांध के उसको मारना, तोप के गोले के थ्रू, वो सब बंद कर दिया था उन्होंने। इस तरह से मतलब बहुत ही निर्दयता से मारने का जो इनका जो तरीका था वो उन्होंने बंद कर दिया था। So today is Dashera. We should be all blessed by the Lord who killed Ravana on this day. And इसलिए आज दशहरा है, तो इसलिए हमें जो उसका भगवान का जो हमें आशीर्वाद हमें लेने का है आज, जिन्होंने रावण का नाश किया था। So I thank you very much for allowing me to speak. Hare Krishna. All glories to Prabhupada. All glories to the Vaishnavas. Please accept my dandavats, all dear devotees. Hare Krishna. Hare Hare Krishna, Prabhuji, thank you very much. As you were sharing that there are a lot of cultural similarities, I was just reading an article on Vedic Bulgaria. So Wow. there was one bit which I was a little surprised to read, which I thought I'll share with you. And it is said that, I'm just reading those two lines, which will highlight your connection, as you said, in so many ways to India, and how it is that you're feeling there's a big connection. Just a minute. I will just read those two lines itself, which will clarify those whole doubts, why it is so. Two more facts deserve attention. In the northern parts of Pamir, there was a state called Sogdinis Bulgar by the Arabs and Burgar by the Tajiks, and Falgar in the west of Pamir. Indian sources of Mahabharata and Puranas mention people of the name of Bolhi, Balika and Boliki, ruled by ancient king called Kardamama. So you were actually part of the empire of Yudhishthira Maharaj. Yes. Yeah. So that's how I think you're connected. I mean, there's a big long article on this. So Yeah, it's a fact. The King Bahlika was the king of the Bulgarians at that time, and he gifted Yudhishthira Maharaj his chariot. right. And they lived in a city called Balkara. It is today's Afghanistan. That's near where Duryodhan's mother came from. Gandhari. Gandhari.
Yeah, so that's near that place. They used to live there. They used to have a big city, massive city there that still has remains in Afghanistan to this day. Correct, correct. And also, if you read the Bhagavatam, I think it's in the same. I think it's in the same second canto. In the second canto, little earlier, it's explained that even fallen races like Pulindas and Huns and this and that take shelter of the Lord, they are glorified. So we were also known as the Huns. If you read Prabhupada in the purport, he explains it's East Germany to Russia. So practically this whole area was controlled by the Huns, and this is another name for the Bulgarians. They were called, they didn't call themselves Huns, just like you didn't call yourself Indians, but they gave you that name. We were called Huns by the Romans. So actually the Bulgars, this is the Aryan race, Bulgaria, Arya. It's within our name that we are Aryan culture, but of course with the arrival of Kali Yuga, they became very covered over by the forces of the age, and a lot of the knowledge of the Aryan culture of Bulgaria is being lost, and now we are trying to revive it through Rakovsky. Rakovsky has written numerous books, and he is pleading in these books that Bulgaria reconnects with its very roots, because he speaks in great glorification about the Vedas, and he says that the Vedic culture is the most ancient, the most beautiful, the most pure, the most full of knowledge about creation and everything, way before the Christian and Greco-Hellenic idea. So I'm now doing a book that will come soon out in Bulgarian, which is a book by Rakovsky, but I refresh the language so people can read it more easy. And I am going to release that book in Bulgarian language. And then I'll translate it in English, because I feel that this book should be read by people all over the world. It's a dangerous book. It's a dangerous book in inverted commas, because it explains history in a completely different way to what we learned at school. So these books have been hidden for long times. Most Bulgarian people don't even know about these books of Rakovsky. They just know a little bit that he was a great freedom fighter, but they don't know that he was actually a guru. He was like ideology liberator. He was actually teaching the real knowledge of Bulgaria's ancient roots connected to the Vedas. So it's time now we can redo the mistakes, and we usher this golden age by our humble service. And we beg all the devotees for the mercy, their mercy, and the mercy of the Guru Parampara, and of course Shri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu and Krishna himself. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Yeah, you rightly said about Balik Maharaj. One more thing, just before I forget. There is a book called Rakovsky, the great son of Bulgaria and the great friend of India. It's a book written by some gentleman called G. Mukherjee. Maybe Gopal Mukherjee or Govind Mukherjee, I don't know. It's written maybe 20, 30 years ago. Rakovsky, the great son of Bulgaria and the great friend of India. It's in English. You can find it's on the internet. You can at least read 50, 60 pages of that book. And you can get familiar with his teachings and ideas. Please name the book again, Prabhuji. Rakovsky, the great son of Bulgaria and the great friend of India. Okay. Yeah. Okay, if there is a comment or question, something, I'll try to answer brief, because I have to go to two preaching programs from here. One today and one tomorrow, but it's in different cities. So I'll try to answer briefly.
You're in Sofia or in which place? No, I'm in a place called Sliven. Sliven Okay. is like 300 kilometers from Sofia. It's below the mountains. Our mountain used to be called Hemus, and they say it's from the Himalayas, Hemus. You see, it's like a shortened of Himalayas, Hemus. So I am just below that mountain. I live there. Hari. Yeah. Malika. Thank you. If any devotees have any questions, they would like to check quickly, they can raise their hands. Sarana Prabhu, any question you have? Something in the chat box? It's always a great opportunity to listen to Prabhuji. We are really inspired, and it's kind of different perspective that we get, and he has so much historical things he will tell us. So I always listen to Prabhuji with apt attention. Thank you, Prabhuji. We wish you all the very best, and we want to see the great revolution coming through all your efforts. Yeah. Thank you, Prabhuji. Very kind words of you. I'm so happy that I could be taking part in this program today, and I thank Radha Bhav and Gaur Prabhu for inviting me. I'm really feeling blissful and honored to be with you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. We have been missing your physical trips here, Prabhuji. I hope everything now settles down and COVID Baba allows free travel. Yes. Yeah, I'm waiting for that day, because that part of life I miss. My travels. Devotees in South Africa are waiting also for me to go and visit them and help them. But for more than a year, I haven't been there already. So once the like they say, the air clears up, we can travel again, and we can continue with our life as it was. Hopefully, we will go to that point soon. We heard you well, and we're thankful for you, Prabhuji. And we would like to also pray for Bhakti Chaitanya Swami Maharaj, who was with you a long time in South Africa. He was not well, I heard. So I'm sure he must be putting. Bhakti Chaitanya Swami. Yeah, he was not well, is what I heard. Some operation was there, and I hope he's okay. I've not got the latest news, but yeah, he's apparently discharged from hospital, but he has to be on some medication for a long time. Okay. And I personally think that it can be from the vaccine, because some organisms cannot take it, and we shouldn't mandate. They try to, in America, to mandate now vaccine for everyone, but some organisms can't take it, and it has adverse reactions. So hopefully he recovers from that. Some devotees who took it also had some effects, and they went through process of cleansing, some fasting, and then drinking some herbal remedies to cleanse the body. So it's something that they're trying to push on all of us, but I don't think it should be mandatory. Yeah, it should be by choice. Yeah, so I hope Maharaj covers. Yeah, I remember Maharaj used to be very active with you, and both of you were there involved with a lot of work in South Africa. That's why I remembered him. We know each other since 1998, and we've done a lot of service in Cape Town, Durban, Johannesburg, and other cities of Port Elizabeth. So we know each other very, very well over all these over 25 years. Yeah. Great. We'll surely pray for Maharaj, and thank you again, Prabhuji. So we look forward for some other time when possible. We'll be in touch with you. And pranams and Vanchakalpadrivascha Kripasan Patita Nam Pavnebhyo Vaishnavyo Namo Namah Anand Koti Vaishnavindi Ki Jai. Prabhuji's help from all of us in Shamadesh. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Srila Prabhupada ki